Good afternoon, students. Now we will discuss the question of the maxima minima from the miscellaneous exercise of chapter number 6. Now the question is, a point on the hypotenuse of the triangle is at a distance of A and B from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is equal to this much. In this question, two things we have to prove it. First, the length of the hypotenuse is minimum or the least. For that, what we have to do, we have to find out the second derivative, and that should be greater than 0. Means by second derivative test, if the second derivative is positive, we can say that the length of the hypotenuse is minimum or the least. And second thing, what we have to show that the length of the hypotenuse should be equal to a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole power 3 by 2. Now how we will solve this question? Suppose there is a right angle triangle. This is the point on the hypotenuse P. It is at a distance of A and B from both the sides. Okay, यहाँ से side A है, from this it is B. This angle I am taking theta, so this angle will also be equal to theta. I have to prove that the length of the hypotenuse is minimum. So length I am writing AP plus PC. To how to calculate the AP plus PC? We have taken this triangle first. तो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular we have taken B and hypotenuse is PC. So PC will be equal to B cosecant theta, and the cos theta is equal to A base upon hypotenuse, means A upon AP. So AP will be equal to A secant theta. Now AC, this whole length will be equal to AP plus PC. AP plus PC. AC I am representing as L. AC को L ले लेते हैं. Now AP we have already calculated, that is equal to what? A secant theta, and PC is equal to B cosecant theta. हम क्यों ले रहे हैं? Because the length is combined length of AB and PC. We have substituted this value of AB and PC. ठीक है, AP sorry. Now A and B are the constants, so this will be the function of theta. I will derivate this function with respect to theta. अब इसको theta के respect में जब derivate किया, A, this is secant theta tan theta. The derivative of secant theta is secant theta tan theta. The derivative of cosecant theta is minus cosecant theta cot theta. By second derivative test, what we supposed to do? हमें क्या करना है? We have to put the first derivative is equal to 0. मैंने इसको 0 के equal किया. This minus this is equal to 0. I can take that value that side. उसको इधर ले आई. Now sin and tan we have converted into secant, and tan we have converted into sin cos. Secant को लिखा 1 upon cos theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. Here it is B. Cosecant theta is 1 upon sin theta. Cot theta is cos theta upon sin theta. दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटे तो साइन क्यूब थीटा. ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यूब थीटा. मैं कॉस क्यूब थीटा को इसके नीचे ले आई. साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? This is equal to tan cube theta. So the tan cube theta is equal to b upon a. So tan theta is equal to b by a की power 1 by 3. So this till this we have calculated. Second derivative test में what we supposed to do? पहले हमने first derivative निकाला, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करी, वहाँ से हमने ये tan theta की वैल्यू निकाल ली. Now we have to find out the second derivative. Second derivative means this again we have to differentiate it. हम इसको दोबारा differentiate करेंगे बेटे. इसमें UV रूल लगा लेंगे, इसमें भी UV रूल लगा लेंगे. Okay. Now secant theta and tan theta we can derivate it, या आप इसको sin cos में convert कर दो. So the last value whatever you will get, वो आपकी second derivative, because theta is in the first quadrant, तो this d square L upon d theta square will be greater than 0. आप इसमें UV रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो लास्ट में वैल्यू आएगी फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. और आपको पता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जिसके लिए भी पॉजिटिव आया दैट इज मिनिमम. ऑपोजिट होता है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर पॉजिटिव
पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, सो वी कैन से दैट द लेंथ इज द मिनिमम। अब यहीं तक आपको नहीं रुकना, दे हैव आस्क्ड यू द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस शुड बी इक्वल टू दिस। ओके, सो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस, ये लेंथ की वैल्यू ये आनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल फाइंड इट। हाउ टू फाइंड आउट? tan थीटा वी हैव गॉट दिस वैल्यू। tan क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So perpendicular is b to the power 1 by 3 and the base is equal to a to the power 1 by 3. You know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. हमने वैल्यू पुट करी, b की पावर 1 by 3 होल स्क्वायर, तो दैट इज 2 by 3. फिर यहाँ पे भी a to the power 1 by 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 by 3. So hypotenuse will be equal to what? The root of this. Now we will put the value over here. हम यहाँ लेंथ पे कर देंगे a. Now secant theta is hypotenuse upon base and the cosecant theta is hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse we have already calculated, substituted that value. Base is a to the power 1 by 3, substituted that value. अब what we can do, हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. यहाँ बचा a upon a to the power 1 by 3. See, if you will solve it, it will be like this. ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, बेस सेम, पावर कैन बी एडेड, 3 minus 1 that is equal to 2 by 3. तो a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Similarly for this also. Here the power is half and here the power is 1. So when the base is same, power can be added. Half plus 1 that is equal to 3 by 2. Now we have shown that the length of the hypotenuse is equal to a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole power 3 by 2. Two things we have to prove in this question, and we have proved that. First, the length of the hypotenuse is minimum. So first of all we have calculated the length of the hypotenuse. Then by second derivative test क्या किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्वल किया, वहाँ से tan की वैल्यू निकाली, फिर दोबारा इसको डेरिवेट करेंगे बिकॉज थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये देखो एक्यूट है ना थीटा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0. तो हमने बोल दिया द लेंथ इज मिनिमम. बट आपसे बोला लेंथ भी निकालो, तो यहाँ वैल्यू पुट करी, वी हैव सिंप्लीफाइड इट एंड वी हैव गॉट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिस.